Amazing. Once again, I welcome all of you. Welcome, everyone. So it's an absolute pleasure to have all of you here tonight. और आज जो है हम बहुत ही बढ़िया टॉपिक पर वी आर गोइंग डाइव इनटू दिस, जो कहीं ना कहीं आप सबसे रिलेट करता है. और टॉपिक है, आई एम श्योर दैट यू नो, टर्न चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज. अपने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कैसे कन्वर्ट करना है. यहीं पर कई बार लोग मात खा जाते हैं कि चैलेंज आ गया, अब क्या करूं. और कई बार लोग उस टाइम पे गिव अप कर देते हैं, राइट. सो थिंक अबाउट समथिंग लाइक, आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको लग रहा है कि सब कुछ गलत हो रहा है, राइट. माइट बी दैट इट इज अ मिस्ड डेडलाइन. आपके ऑफिस में कोई आपने डेडलाइन मिस कर दिया है, कोई प्रोजेक्ट आपका फेल हो गया है, या कोई पर्सनल सेटबैक हो गया है. और उस टाइम पर कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती है कि नो, द वर्ल्ड इज क्लोजिंग फॉर मी. पता नहीं सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है. बट लेट मी टेल यू कि उसी चैलेंज के अंदर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, राइट. और इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, राइट, बिकॉज दैट अपॉर्चुनिटी कैन बी अ नेक्स्ट ब्रेक थ्रू फॉर यू. ओके. सो आज के हमारे जो गेस्ट हैं, आई एम श्योर दैट यू नो विकास कुमार. ही इज अ रिनोन्ड माइंडसेट कोच हु स्पेशलाइजेस इन हेल्पिंग पीपल, उनकी हेल्प करने में, उनके पर्सपेक्टिव के ऊपर काम करने में, उनके चैलेंजेस को कैसे अपॉर्चुनिटीज में बनाना है, कैसे स्टेपिंग स्टोन्स क्रिएट करने हैं सक्सेस के लिए, ये उनके ऊपर काम करते हैं. एंड ही हैज years ऑफ एक्सपीरियंस एंड काउंटलेस लाइव्स ट्रांसफॉर्म्ड. और आपके साथ कोई ऐसा पर्सन कनेक्ट हो जाए जिसने वाकई में लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई, राइट. सो हियर इज अ गाइड, how to see the opportunities in your obstacles. So just grab your seat and be ready for this enlightening session. I would say जब तक सेशन एंड होता है, be here, क्योंकि आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने वाली हैं, यू नेवर नो, राइट. सो इससे पहले कि मैं स्टेज विकास को हैंड ओवर करूं, इनके बारे में, जैसे कि हमारा रिचुअल है, इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगा. सो विकास जो है, ही इज अ माइंडसेट कोच. जैसे कि मैंने कहा, ही इज अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल आल्सो, एंड ही इज कोचिंग पीपल फॉर मोर देन 2 years. ही टॉक्स ऑन वेरियस टॉपिक्स लाइक, जैसे कि रिलेशनशिप मास्टरी है, मैनिफेस्टेशन है, बिल्डिंग इमोशनल रेसिलियंस है, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को कैसे शैटर करना है, राइट. एंड कैसे आपको अपने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना है, राइट. ये अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ चैलेंजेस भी रन करते हैं. सो इट इज लाइक कहीं ना कहीं उनके अंदर एक्साइटमेंट बनी रहती है कि ओके, दिस इज अ चैलेंज, नाउ व्हाट टू डू. तो ये सेशंस लेते हैं गोल सेटिंग के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर. और एक बहुत अच्छा, अभी इन्होंने एक अपना टास्क चलाया हुआ है, एक मिशन पर है ये, कि उसमें क्या है कि मॉर्निंग क्लब जो इनका चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं. और ये अब तक उनके 350 सेशन से भी ज़्यादा मॉर्निंग सेशन ले चुके हैं. And he's also running he's running various communities, including like Shining Superstar, जो कि सबके लिए it's open for all and it's free. So make sure that you join that club. And I'm really happy to have Vikas here. So Vikas, thank you so much for coming into this session. और आपने तो मतलब बहुत कमाल कर रखा है आपने तो. Thanks, Prasanji, for giving me giving such generous introduction, and I feel privileged to be invited. And जैसा कि प्रशांत जी ने बोला कि हम में से कोई ऐसा व्यक्ति हार्डली होगा जो कि चैलेंजेस से, प्रॉब्लम से अनटच्ड होगा, अछूता होगा. If at all you find a person who has never encountered any problem in life, I would rate that person, label that person as a dead person. Because the very fact that you are going through the challenges, it means that you are trying something, right? So, my question to you before even I talk about problems and challenges, what is the first thought that comes across your mind whenever you are confronted with challenge? Do you go in blame mode कि ये इसकी वजह से मेरे को ये चैलेंज फेस करना पड़ रहा है,
It may be some vague invisible force. आपको पता नहीं अगर कोई मिल रहा है कि ये व्यक्ति की वजह से हुआ। हो सकता है मदर फादर की वजह से, हो सकता है सिबलिंग की वजह से, हो सकता है पीयर ग्रुप की वजह से, हो सकता है बॉस की वजह से, हो सकता है आप जिस रोल पे हो, फादर मदर, जिस भी रोल पे हो उसकी वजह से, या आपको अगर कुछ भी नहीं मिला तो आप ब्लेम करते हो भगवान तक को। सो हैव यू एवर experienced this kind of pattern wherein you blame someone else for your problems, wherein you complain about the problem attributing it to someone? I think we all at one point or the other have invariably complained and blamed people in our environment, right? आप में से कितने से ऐसे लोग हैं जो एक ही प्रॉब्लम, एक ही चैलेंज को कई टाइम से, बल्कि 10 साल हो सकता है, 15 साल हो सकता है, इवन लाइफ टाइम भी हो सकता है, आप कॉन्स्टेंटली फेस कर रहे हैं? यू क्रीप, यू कंप्लेन, यू फील पैरालाइज्ड, बट यू आर एबल टू डू नथिंग अबाउट इट। आप यहां तक कि ये करते हो भगवान से प्रे कि काश भगवान ये प्रॉब्लम, ये चैलेंज मेरे लाइफ से किसी तरह से निकाल दो। हैव यू एवर prayed such kind of prayer before God whenever you are in problem? I think at one point or time we did pray something like this. We kept waiting for eternity, thinking that problem or the challenges that I am facing will change on its own. We keep revisiting the same problem, encountering the same problem in one form or the other will numerous times, right? Now you might have also observed that you have this mindset of 3P, I call. You consider problems as something which is permanent, which is pervasive, and which is personal. You think that the challenges I am facing will last for lifetime. Just because something you tried in the past did not work out, you thought that it would not work forever. Just because something did not work in your favor, you thought it will not work in the future also. You define your future experience and your present action based on your past experience with the challenges. Just because one day turned out to be bad, you think that your whole life is bad. Have you ever come across such mindset? Have you ever run across similar kind of thoughts? Where just a single event triggered you to such an extent that you made it about the whole day. And that day, how it turned into weeks, how the weeks turned into months, how the months turned into years, and how the year turned into life, you never came to know. This is what is happening most of the times with most of the people. This was permanent. Now pervasive. Just because one of aspect of my life is derailed, which I think because of certain challenges that I face in my life, I make it about every area of my life. Let me give you an example. Suppose I am facing the challenge of reducing my weight. Now I am not able to reduce my weight somehow. I am facing challenge in that area. Now what it is doing to me is, I think since I am not able to reduce my weight, I will not be able to do
anything in any area of my life. I will not be able to achieve any goal in any area of my life, be it relationship goal, be it career goal, be it financial goal, whatever it is. You make it pervasive. The problem which was in one area, the challenge which you are facing in one area, now runs across the whole spectrum and the whole dimension of your life, right? So you might have experienced this also. And there are people who live their life with the same mindset all across their life. Now, third interesting part is personal. They take the challenges and the problems personally. Just because something did not work out in the past, just because they were not able to overcome the challenges in one area of their life, they make it about themselves. They think that they are not worth good enough. They are they think that they are worthless. They go in blame, shame, complain mode. They go in guilt mode. As a result, they are not able to do anything in their life. Have you ever faced such kind of issues in your life because of these challenges? Any of the challenges? This mindset of 3P has led to more damages, more depression than anything else in the world. You keep on looking at the problem, waiting for the problem to change. You wish, you hope that things will somehow change on its own. When when the problem remains as it is, it turns into anxiety. And if it is not addressed at that level, then you become frustrated. Even if it is unchecked at that level, you become angry. You become angry at others first, and then you become angry with yourself. Now, after having gone through the various stages that I elaborated, going from hope to being anxious to being frustrated to being angry at yourself and angry at others, now you become helpless. So, most of the people in today's time, whenever I talk to them about the problems, it is like adding salt to the wounds or the injury. They often say that I am running into several types of problems in my life. Before one problem ends, the next problem is waiting to come in my life. Not even a single day passes when my life is without problems. Now, here is the catch. I told you what is the first thought that goes through your mind whenever you encounter the problem. I just illustrated through various examples that all my thoughts, which were anxious to helpless, to blame, to complain, all these thoughts led to my energy draining down. In order to solve any problem, I have to have energy to deal with it. But since I give all my energy to the problem in turn becomes stronger than me. As a result, I am not able to overcome the obstacle, deal with the challenges, handle the problems in my life. This is what is exactly happening. Now, let me ask you one thing. People often equate problem है
चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, तो स्ट्रेस तो होगा ही. इट इज नेचुरल. There is not even a single person who can remain stress free even when they have the problem. But let me bust this myth here itself that it is not so. Let me define what is stress first of all so that it becomes clear to everyone. Stress is equal to pressure divided by resilience. Pressure is the challenges, pressure is the problem, pressure is the obstacle, pressure is the uncertainties of life. Pressure is the volatility of the life. Pressure is the complexity of the life. Pressure is something which is ambiguous, which we are not sure about. So, this is the pressure over which we have no control. It is bound to be there. Now, what is left? That the thing that is left is denominator. Numerator is pressure, denominator is resilience. How you choose to respond to the situation. If I have higher resilience, automatically, since the denominator is high, my stress level will be down. So, it is not about the problem, but how we represent the problem in our mind that decides how I will respond to the problem. Let me define problem first of all. Problem our problem is nothing but simply the scene of our life. And the scene, interestingly, is meaningless, is neutral, and has no inherent meaning in it. Every problem that we see is nothing but the scene of our life, which is neutral. As simple as that. We give meaning to the situation based on our own perception, and based on that perception, I give energy to the situation, so much so that we make it about our whole of life revolving around the same problem for the whole life. Isn't it so? Let me give you an example that will drive home the point that it is not about the challenge, but it is about how you cope with the challenge, how you respond to the challenge, what stories you make up in your mind regarding the challenge. That will decide your emotions. Let me share with you one example. Suppose you have a boss, and a boss has four subordinates, and the boss calls each subordinate one by one in his cabin. When one subordinate enters the cabin, he gets a scolding from the boss because he has not completed the task on time. That person, that subordinate who entered the room, shrugged off the comments of the boss, thinking that boss is like this, वो हमेशा ही गुस्सा करते रहता है, I will not take it personally, वो बाहर निकल आता है. This is about subordinate 1. Now the second subordinate enters the cabin. He gets the same scolding for the same task from the same boss. But that subordinate responds differently. He makes it about himself. He feels guilty. Same situation, different response. Third subordinate goes in front of the boss, gets the same scolding, again for the same task, but this time the subordinate takes the comment of the boss seriously
and promises to the boss that this thing will not happen again. So, what you observe here is problems, yes, challenges, yes, obstacles, yes, but how I respond to these things is entirely my choice. How I interpret the events, that is entirely up to me. Problem that you think is outside is not actually outside. The problem that you see outside is in fact in your mind. So my question to you, what where do you look first when you see the problem? Do you focus on the problem? Do you focus on the people around you to blame or to complain? Or do you look within yourself? This is my question to all of you. Most of the times, whenever we encounter the problem, we look here and there, looking for someone to blame, waiting for the problem to dissolve on its own, but hardly looking within ourselves. Let me tell you, it is not about the size of the problem, but it is the size of you who will decide most of the time to the problems, like why it is with me. Yes, thanks for sharing your view. Why it is with me, right? Now, although the question may seem innocuous and thoughtless, why it is with me? But let me tell you what is going behind it. Our mind is like a Google. If I ask me, if I ask the Google, give me 10 benefits of having the challenges in our life, it will give me the 10 benefits. If I ask the Google, give me 10 disadvantages of having problems in my life, Google will produce the same results. So, whatever questions that you feed to your mind will comply by providing the reference, supporting that belief, supporting that statement, supporting that question, and this in turn will generate appropriate negative emotions. This is how powerful our mind is. The kind of questions that you ask and give to the mind, the same similar kind of answers you will get. Yes. So you can now understand how important it is to be watchful of the kind of question, kind of thought that I create in response to the problem. Let me tell you one spiritual principle. Although I may tell it numerous times, but we have been so hardwired, we have been so conditioned, we have been so programmed that even though we may intellectually understand the principles, but we commit and repeat the same pattern again and again. Your belief creates your reality. Your thought creates your reality. Now, I want you to introspect and ask the question here itself. What are the kind of thoughts I'm creating? Isn't it anxious kind of thoughts? Isn't it disturbing thought? Isn't it a thought that puts me in a self perpetuating pit of negativity? What are the kind of thoughts that I create whenever I encounter the problem? So, the kind of thoughts that you create will radiate similar kind of energy, and energy in that given when given to the situation will gather more and more strength because of the energy that you have given, and the time will come when the size of the problem will become bigger than you, isn't it? Let me share with you one analogy.
to drive home the point why it is not about the problem, but why it is about yourself. Why it is about yourself. Suppose you are in class 6 and you have been handed over the problem of class 8. You will obviously find the problem to be difficult, challenging. You will not be able to solve the problem, most likely. Now, suppose I pose the similar question to you, but the thing that changed is you now went into upgraded yourself to class 10. Now you are in class 10, and I have given you the same question from class 8. Now, the same problem, which appeared tough, which appeared challenging, which appeared problematic, will suddenly appear easier, will suddenly appear no problem like at all. So, what changed in the process? What changed? The problem was same, the question was same, but you evolved in the process. Isn't it so? So, before I talk about the mindset anymore, I want you to ask few questions whenever you encounter the problem. Question is, what is this problem trying to teach me? What is this problem trying to teach me? Second question, what this problem is trying to teach me about the people around me? Third question that you should ask is, what is this problem trying to teach me about the situations? Fourth question that you should ask is, who I need to be for this problem? Who am I in my current state of being for my problem? Do I need to evolve to solve the problem? Am I my is my current state of being capable enough, able enough to tackle the problem sufficiently? Or do I need to upgrade and evolve in order to solve the problem? Let me share with you that at any point of time, you have three questions, three decisions, in fact, that is entirely under your control. What to focus on, what things mean to you, and thirdly, what I need to do in a given set of situation. These three questions you have entirely in your control. What can I focus on? What I need to focus on? People often ask me, what is the most important resources that I have? Or what does what is more even more important? Is it that resources are more important? I often tell them, more than what you have, even more important is what you do with what you have. It is not about the resources that makes you great, but it is what you do with the resources that are available that make you great. By this analogy, you can very well understand that the most important resources is not time, but the most important resource is the focus. So, what you focus on will expand. Where attention goes, where focus goes, energy flows. And where energy flows, action happens. Now, my question to you again, whenever you encounter any problem or challenge in your life, what are the things that you're focusing on? Are you focusing on the excuses? Are you focusing on blaming others? Are you focusing on disempowering beliefs? Are you focusing on the problem itself? Or are you focusing on the solutions?
Are you focusing on who you need to be? Are you focusing on where you need to go? Are you focusing on who you need to become? Are you focusing on empowering beliefs? Why I'm telling you so? Because focus has very important role to play while dealing with the challenges. Let me again give you an example. During a skiing on the ice, you have trees all around, but still you manage to go amongst the trees very smoothly, very easily. Why don't you see these trees which are there on the ice as obstacles, as problems, as challenges? It is simply because now you are focusing on the path. You are not focusing on the obstacles. Had your focus been on the obstacles, you would have collided invariably against the tree and you would not have been able to ski through the ice. Isn't it so? So, where does all these things fit into the scheme of things? I will give you one simple formula. Even before giving the formula, let me tell you that the problems, get this equation straight and embed it into your mind. My problems is equal to my opportunity for growth. My problems is equal to my opportunity for growth. There are three kinds of people: leaders, followers, and losers. Leader is someone who stretches themselves when confronted with the challenge. Then there are second category of people called followers. Followers seem to struggle with the challenges. And then there is third category of people who are called losers. They shrink from the challenges. And I talked about the mindset in the beginning. How important the mindset is when dealing with a problem. So here it is. I told you the problems is nothing but the scene of the life. Now, a weak mind sees the scene, perceives the scene as something which is problematic. And an average mind sees the same scene as the challenges. Whereas a strong mind sees the same problem as opportunity. So it is about the mindset shift. And let me tell you, the problems do not come in our life to break us. But whatever problems that you face in life, its sole purpose is to build you, is to make you, is to help you evolve, is to help you transform, is to help you stretch further. See, our potential is like a rubber band. A rubber band is successful only when it is stretched. Likewise, our potential will be mobilized only when we are challenged. When we are challenged, we change. And anything worthwhile that you want to achieve will invariably happen when you put in and go through the pain. Anything worthwhile is an uphill task. Only when you take the pain to climb up the mountain, only then you will be able to see the beautiful landscape, beautiful view from the mountain top. Show me any person who is great, who is successful, and who has not endured the pain, who has not gone through the struggle, who has not faced the challenges. Let me share with you a very important uh, thing, and that is one question that often gets asked from the CEO of the company when he goes for the interview. And answering this single question might earn him crores of package,
or might lead to his rejection. What is this question? The simple question that is asked from the person who applies for the post of CEO is, what are the challenges that you faced in your life and how did you handle it? This one question alone helps the interviewer to judge about the capability, the strength, the emotional resilience, and how they adapt to the situation. Right? So, I was talking about the equation. At any more point of time, you have three questions: what to focus on, what things mean to you, and thirdly, what you do in spite of the challenges that try to limit you. Now, I will hand over to you one equation, one mantra that if you keep in mind, you will be able to navigate through any challenges of life. Please listen to it very, very carefully because what I'm going to tell you, it will transform your relationship with any challenges, however intense, however stronger, however gargantuan it may appear. And it is this: what the kind of questions that you ask will decide your focus, quality of focus. The kind of questions that you ask whenever you encounter the problem will decide your quality of focus. And based on your focus, you will give meaning to the situation. And based on the meaning that you give to the situation, you will generate emotions. And based on the emotions that you generate, you will take the decision. And based on the decisions that you will take actions. And based on the actions that you take, it will decide your results. So, in any given question, first important thing that is an important check for you is, what is the question that I asked? This is from where everything else starts. Yes, I hope I have talked a lot. I would love to know from you your questions and what are the things that you want me to answer or whatever you want. Please. All right, amazing, amazing, Bhagat. Thank you so much for sharing this wonderful insight. I'm Thank really loving it, the way you are sharing. And thank you so much for this, your three P's. And so, friends, if you have any question, now we are open for questions. अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, then we are open for the questions. कोई भी डाउट है, कोई क्लैरिटी आप लेना चाहते हैं, प्लीज डू राइट इन द चैट बॉक्स. इट विल बी गुड कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, या कोई चैलेंज है, या कोई और सिचुएशन है, तो आप पूछ सकते हैं. मीनवाइल मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, Yes. तो लेट्स टेक देम टिल देन. Sure, sure, sure. तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि सर, एज अ कोच, आपके लिए आपका सबसे रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस क्या रहा है? Great, super. I have gone through so many challenges. If you ask me, I will just narrate one important thing, the challenges that defined my role or career as a coach. कोविड के टाइम पे I was overweight, around 99 kg. It was during the month of April 2021. My mother was admitted in the hospital and every members of my family were also infected with COVID during that time. It was a big challenge. Yeah. I wanted to meet my mother in the ward of the hospital. As I was going to enter the hall, the doctor at the door interjected and told me, "Please don't go inside." I told, "Why?" She is my mother, I should must go. He told me as a word of caution that you are overweight,
and you are likely to catch the infection of corona very easily. So, I am telling you for your own safety. And this jolted me completely from inside. I was reading so many books. I was, I was thinking that I'm intelligent and I know everything. My life is settled. And here I was not able to go and meet my mother. What kind of life I'm leading? This came as a big jhatka to me, and I thought, and this was one of the breakthrough moment for me, and shattering moment at the same time. Then I decided that if I'm not able to take care of my own life, even though I may earn lots of money, even though I think I'm doing so much, it is of no use if my life is not at all sorted. Then I started taking care of my health. I reduced around 24 kg in nearly 6 months, and decided from there on that I will start running fitness group, and I will make the people more aware that they should be very particular with respect to their health. And this is how my journey as a fitness coach started. Basically, I do not know so much about nutrition and all, but it is my sincere intention, pure intention, that at least I should make people aware of the importance of health. Now, when I started this fitness community, people started telling me, why not talk about this holistic health? Then I agreed, yes, you are very right. When I talk about health, it has to be holistic. Since then, I started taking meditation session and connecting that, see how the dots connect backwards. I had done masters in value education and spirituality in the year 2008. I did not know back then how will I put my knowledge into use and in what way. Now I'm often even surprised how I'm using these knowledges that I learned during those times in 2008, 15 years ago. Now I'm using it. So you see, it was those challenges that was first able to help me transform my life, and then I started inspiring people. Those people who were late risers now wake up early in the morning, go for the walk, post timely dinners, and so on. So, this is how you can turn the challenges into the opportunities. Yes, this is Very one nice. example. There are so many examples. Uh, I will share some other time if time permits. Great. Very Yes. nice. Thank you. Thank you so much, Vikas, for sharing this wonderful experience. So, friends, once again, if you want to ask anything, you can just type in the chat box. This is the rare time that you can. आप ये बहुत रेयर टाइम होता है कि आप किसी कोच के साथ लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं, Right, 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 राइट? right. यूजुअली इनके सेशंस जो हैं बहुत काफ़ी महंगे होते हैं, तो आपको इजीली आप उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, बट ये आपका चांस है दैट यू कनेक्ट विद हिम। तो थैंक यू सो मच विकास फॉर आंसरिंग दिस। एक और Thank क्वेश्चन आया है कि क्या मतलब चैलेंजेस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं हमारी लाइफ में पर्सनल ग्रोथ के लिए? अगर हाँ, तो क्यों? और अगर नहीं तो क्यों? देखिए, मानव की ये फितरत होती है कि जब तक वो कंफर्ट जोन से उसको हिलाया ना जाए, तो हिलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। राइट, I often call challenge problems as the most loyal accountability partner. चैलेंजेस जो है आपको तब तक पीछा करते रहेंगी जब तक आप सुधरते नहीं हो, जब तक आप लेसन नहीं लेते। आपको या तो वो रिवार्ड करेगी, आप चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो, या फिर जब तक आप सीखते नहीं हो तो उस पेन से बार बार गुजरते रहोगे। तो इससे अच्छा अकाउंटेबल पार्टनर कौन हो सकता है? आपको आप खोजते रहते हो कि मेरे को अकाउंटेबल पार्टनर चाहिए, अकाउंटेबल पार्टनर चाहिए। ये आपको बेस्ट गिफ्ट है, बेस्ट टीचर है, जो आपको मुफ्त में मिला हुआ है। यह बताने के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, अभी आप जो है कर लो, इसको सुधर लो। आपको ये चीज सीखने की जरूरत है, नहीं सीखोगे तो वहीं के वहीं रखोगे। और मैं बता दूं आपको, द पेन ऑफ ग्रोथ
is far, far, far lesser than the suffering of stagnancy, than the suffering of being in the comfort zone. You will be having regret later on. So आप देख लो कितना बड़ा काम कर रहा है आपको चैलेंज। आप अपने पोटेंशियल तक को नहीं जान पा रहे हो जब तक चैलेंज नहीं आपके सामने आता है, राइट? सो ये आपको अपने आप को जानने का बहुत बढ़िया मौका दे रहा है। मैं तो इवन ये बोलूंगा, जितना बड़ा चैलेंज उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ के लिए। आप देख लो, इवन इवन लोग मेरे से पूछते हैं कि कैसे हो सकता है चैलेंज अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ होगा। फॉर एग्जांपल सपोज घर में किसी का डेथ हुआ, ये चैलेंज आया मेरी लाइफ में, कैसे ये अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ होगा? लेट मी शेयर विथ यू, इवन द सो कॉल्ड बिग थिंग एज डेथ टीचेज यू द द इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ मोर्टेलिटी ऑफ लाइफ, कि जीवन अनंत चलने वाला नहीं। आपको जैसे ये रियलाइजेशन होगा, आप हर एक वक्त को कीमत देना शुरू करोगे, आप लाइफ को इंपॉर्टेंस देना शुरू करोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट लेसन जो सिखाता है आपको, वो टॉलरेंस सिखाता है, आपको पैसेंस सिखाता है, आपको ह्यूमिलिटी सिखाती है। ये सब गुण जो है ना, आपको किताबों से पढ़ के नहीं मिलेगा, जो कि चैलेंजेस सिखाते हैं, जो कि आपको प्रॉब्लम सिखाती है। तो मैं अगर इसके बारे में बोलता जाऊं तो वो कम होगा। आप बस ये समझ लें कि प्रॉब्लम मेरा सबसे लॉयल फ्रेंड है, सबसे लॉयल अकाउंटेबल पार्टनर है, और मैं ये जो मेरे को सिखाने आ रहा है, मैं ओपनली सीखने के लिए तैयार रहूंगी। बिकॉज प्रॉब्लम विल कीप कमिंग अगेन एंड अगेन। इट विल, you will be keeping, you will recycle your same experiences again and again until you learn the lesson. प्रॉब्लम सबसे पहले जेंटली आपको नज देगा, आप नहीं सीखते हो, एक मुक्का देगा, थप्पड़ देगा, फिर जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक वो छोड़ने वाला नहीं है ना? तो बेहतर ये है कि हम उसको मित्र बना के, जो भी हमें इशारा दे रहा है, नज दे रहा है, उसको स्वीकार करें, समझें और आगे बढ़े। Very nice. Wonderful. Thank you. Thank you so much once again. And for asking this question, my friend. So the next thing is एक और क्वेश्चन है कि अगर चलो हमारे पास चैलेंज आ गया, राइट? तो हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए उसको एक अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए? पहला अपॉर्चुनिटी ये है, सबसे पहले तो पॉज करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा क्या रहता है इंपल्स, आई जस्ट वांट टू समहाउ सॉल्व द प्रॉब्लम। आइदर आई बिकम पैसिव एज इफ द प्रॉब्लम्स डू नॉट एग्जिस्ट, और हमारा दूसरा अप्रोच ये रहता है कि आई हैव द इंपल्सिव अर्ज टू सॉल्व द प्रॉब्लम समहाउ। बट sometimes more than the problem I shared with you, how you perceive the problem is more problematic than the problem itself. Let me share with you what it means. Sometimes suppose मेरे डेस्क पे बहुत सारा किताबें इधर उधर बिखरी पड़ी है, ये प्रॉब्लम है। जब भी आता हूं मैं, दिखता है किताब मेरे को पड़ा हुआ, मैं क्या करता हूं, मैं सोचता हूं ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं किताब को पूरी तरह से सॉर्टिंग कर देता हूं, ठीक है, सॉर्टेड मैटर। अब क्या हो रहा है, कुछ दिन बाद फिर से मैं देख रहा हूं किताब उसी तरह अस्त व्यस्त है मेरे टेबल पे, आई एम फेसिंग द सेम चैलेंज अगेन। सो समटाइम्स it is not about solving the problem that is more important, but what is the cause that is leading to the problem that is more important sometimes. The cause that is leading to the problem, क्या cause है ये, कि मेरी हैबिट है चीजों को अस्त व्यस्त रखने की। अगर मैंने हैबिट नहीं चेंज करी, अपनी चीजों को सॉर्टिंग करने के रखने की आदत नहीं डाली, तो वो चीज बार बार डेवलप होगी। दूसरा एस्पेक्ट ये है, आपका प्रश्न फिर से बताएंगे? मैं कि जब भी हमारे पास कोई चैलेंज आता है तो सबसे पहला स्टेप उसको अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले मेरे को देखना है कि प्रॉब्लम को समझना है। प्रॉब्लम समझना मतलब कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आई होगी, और आप प्रॉब्लम पे फोकस ना करके अपने पे फोकस करो। मैंने बोला कि am I really prepared to deal with the problem? Who I need to be for the problem? Is my state of being competent enough, जो अभी की है, to solve the problem?
or do I need to level myself up? Do I need to change my perception about problem in the way मेरे belief में तो problem नहीं है. Is it because of my limiting belief that I see it problem? Sometimes वो excuse हमको लगता है कि चैलेंज है और वो एक्सक्यूज लगता है वैलिड रीजन है. तो वी नीड टू एग्जामिन आवर बिलीफ, वी नीड टू एग्जामिन आवर हैबिट्स, वी नीड टू एग्जामिन कि जो मैं मीनिंग दे रहा हूँ, जो मैं स्टोरी क्रिएट कर रहा हूँ, वो कहाँ तक सत्य है. इज इट देयर एन एलिमेंट ऑफ ट्रूथ इन इट? Is it applicable for everyone? Is it applicable every time? Or is it that I am giving meaning to it? So, introspection about yourself and trying to understand the problem in its totality is the first step towards turning that problem into an opportunity. Yes. Very nice. Wonderful. थैंक यू सो मच वंस अगेन. तो विकास, एक क्वेश्चन और है कि सर टफ सिचुएशन सबके साथ होती हैं, राइट? ऐसा नहीं है, ऐसा कोई होगा जिसके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो. तो इस क्वेश्चन से पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं. वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम चिरंजीवी. सो चिरंजीवी जी इज आस्किंग हाउ टू आइडेंटिफाई दैट वी आर ट्रैप्ड इन अवर कंफर्ट जोन एंड हाउ टू गेट आउट ऑफ इट. थैंक यू सो मच. यस, चीजें जब आपको आपको ग्रोथ नहीं दिख रहा है, आपको कोई स्ट्रेचिंग नहीं दिख रहा है, आपको कोई चीज मजा नहीं आ रहा है, आप आराम तलब होते जा रहे हैं, यह होते हुए भी कि आप मूव नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आप स्टक हैं, स्टैग्नेंट हैं, आप कंफर्ट जोन में हैं. जब तक आपको किसी तरह का शॉर्ट टर्म पेन, शॉर्ट टर्म चैलेंज, स्ट्रेचिंग ना हो, आपको स्ट्रेच ना करना पड़े, तब समझ जाइए कि आप कंफर्ट जोन में हैं. अगर आप वहीं की वहीं टिके हुए हैं, अटके हुए हैं, तो समझ जाइए आप कंफर्ट जोन में. ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट संकेत है कि अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कंफर्ट जोन में हैं. एंड हाउ टू गेट आउट ऑफ इट? यस, चैलेंज योरसेल्फ, चैलेंज योरसेल्फ. अगर परिस्थिति नहीं आ रही है आपको चैलेंज करने के लिए, तो यू चैलेंज योरसेल्फ. सी, आई विल टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Thanks Suman for raising this important question. So the beauty about challenging yourself is it will take you to the area of your life that will closer to or nearer to your heart. You will challenge yourself in that area where you want to grow, in that area which is closer to what you truly desire. If I challenge you, I may challenge you based on what I think you should do. But if you challenge yourself, then you will challenge on yourself only in that area where is your desire, where you want to grow, right? So it's very important that before the challenge challenges you, challenge yourself proactively and push yourself out of comfort zone. I often say this Mel Robbins rule, 5-second rule. Whenever you have the fear, you have the hesitation of doing something new, of taking action, count 5, 4, 3, 2, 1, and physically move your body. Physically move your body then and there itself. Counting backward has the advantage that it disrupts your current thinking pattern. Now, when you take action in that moment of hesitancy, then you break out of the inertia. And once you have taken the action after these 5 seconds, then gradually you build up the momentum. You will no longer have internal resistance and the inertia that will set you to go back to the comfort zone. That's the beauty of going out of comfort zone. Let me share with you one example. मुझे मॉर्निंग में वॉक करने में जोर आता है एंड सोना मेरे को कंफर्टेबल लगता है. मैं क्या करूंगा, मैं ट्रैक सूट जो है तकिए के पागल में रख दूंगा और जूते जो हैं बेड के नीचे पास में रख दूंगा. आई विल मेक थिंग्स इजियर फॉर माई सेल्फ. व्हेन आई मेक थिंग्स इजियर फॉर माई सेल्फ एंड जैसे 5, 4, 3, 2, 1 किया,
मैंने इजी ऑलरेडी कर दिया है। मैं अपने आप को बोलूंगा मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए सिर्फ वॉक करने के लिए पार्क से होके आ जाऊंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा मेरे को दौड़ के आना है 5 किलोमीटर, मेरे को 10 स्टेप्स करने हैं। मैं सिर्फ अपने बोलूंगा मेरे को सिर्फ पार्क जाके आ जाना है, बस गेट तक ही जाऊंगा मैं, वहां से आ जाना है। आप देखोगे जैसे गेट पे पहुंचोगे आपका कदम खुद व खुद पार्क के अंदर जाएगा। आप एक एक वॉक करोगे, एक राउंड, फिर मन करेगा 2 राउंड वॉक करेंगे। नाउ आई ऑफन से सक्सेस इज द बिगेस्ट मोटिवेटर। when you have kept the challenge of walking for just 1 round or even going up to the gate park ka gate, आप अगर 2 राउंड भी कर लेते हो ना, इट इज सक्सेसफुल। नाउ दिस सक्सेस विल मोटिवेट यू इन टर्न ऑन अनदर डे टू गो फॉर 3 राउंड, फॉर 4 राउंड। दिस वे आप देखोगे कंफर्ट जोन से कैसे कैसे आप बाहर निकल जाओगे पता नहीं चलेगा, राइट? Amazing. Wonderful. Thank you so much once again, Vikas, for this wonderful answer, and Chiranjeevi for asking this question. बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने, और विकास जी आपने बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। थैंक यू सो मच। थैंक्स तो थैंक्स। इसी के साथ एक और क्वेश्चन आया है कि टफ सिचुएशन तो होती हैं हम सबके पास, तो उस टाइम पर अपने माइंडसेट को हम कैसे पॉजिटिव रखें? फिर से क्वेश्चन सुनाएंगे, बताएंगे एक बार। कि टफ सिचुएशंस तो सबके पास होती हैं, राइट? कुछ लोग ओवरकम कर जाते हैं, बट उस टाइम पर हम कैसे अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें? यस, तो माइंडसेट को पॉजिटिव रखने का एक तरीका, सरल उपाय यह है कि आप अपने आप को कॉन्शियसली पॉजिटिव लोगों के बीच में रखें। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज आजकल का टाइम बहुत ही चैलेंजिंग है, जिसमें कि आप यदि आप कॉन्शियस नहीं एफर्ट करोगे, इंटेंशनल नहीं होगे, तो इतना नेगेटिविटी है एनवायरमेंट में कि आप नेगेटिविटी के लिए आपको ट्राई नहीं करना पड़ेगा, आप नेगेटिव सोचना शुरू कर दो, राइट? तो यू हैव टू बी इंटेंशनल एंड बी एंड सेलेक्टिव अबाउट द काइंड ऑफ पीपल यू एसोसिएट योरसेल्फ विद, एंड आई थिंक कम्युनिटी इज द बेस्ट थिंग। आप किसी भी पॉजिटिव कम्युनिटी से जुड़े जिनमें कि ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट वाले लोग हैं, जिनका कि लक्ष्य रहता है अपने आप को इंप्रूव करने का, और आप यदि उस ग्रुप में अपने आप को जोड़ते हैं तो आप पाएंगे जो चीज आप करना चाहते हैं वो सभी लोग ऑलरेडी कर रहे होते हैं। तो आपको इंस्पिरेशन आएगा, यार मैं जो कुछ कर रहा हूं बड़ा चैलेंज नहीं है, सब लोग कर रहे ही नॉर्मल है। सो व्हाट यू इंटेंड टू डू इज समथिंग which is already normal for the community, existing members of the community. So it will become easier for you, and you will find जब आप पॉजिटिव लोगों के बीच में रहोगे तो उनकी एनर्जी आप भी एब्जॉर्व करोगे, तो वो काफी हद तक आपको चीजों को आसान कर देगा। दिस इज वन इजी मेथड दैट आई कैन सजेस्ट। सेकेंड इज मेडिटेशन। मेडिटेशन में आप अपने आप को देखोगे कि मेरा थिंकिंग पैटर्न क्या चल रहा है। जब आप ऑब्जर्व करोगे थॉट्स को तो आपका थॉट पैटर्न करंट क्या है वो भी पता चलेगा, और कैसे उसको जेंटली गाइड करके पॉजिटिव डायरेक्शन में ले सकते हैं वो भी पता चलेगा। तो अभी तो मैं ये बोलता हूं कि बहुत सारे लोग ना, इवन दो they think that they are aware, they are awake, but they are in deep slumber, they are unconscious, including me। मैं बहुत हद तक मैं ये बोलूंगा, इवन फॉर एग्जांपल अगर आप हेल्थ को लेके कॉन्शियस नहीं हो, आपको पता नहीं है, तो आप हेल्थ के एस्पेक्ट में सोए हुए हो। इसी तरह बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं हमारे जिनमें हम सोए हुए हैं। हमारा थॉट क्या चल रहा है, हमारी किस तरह की हैबिट है, हम कौन चीज, जो चीज मेरे लिए खराब भी है मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ये सब चीजों की आप अवेयरनेस आएगी। कई बार हमको पता ही नहीं चलता है, हम इंस्टेंटली मैं से बोल दे, जैसे सिचुएशन आए ऑब्वियसली इस पे तो ऐसे ही रिएक्ट करना है, ऑब्वियस कुछ नहीं है, हम उस चीज को इतना बार अनकॉन्शियसली रिपीट किए कि वो हमारे लिए ऑब्वियस हो गया है। तो ये सब चीजों से आप उभरते हुए पाएंगे अपने आप को, और चीजें बहुत ही सहज होती जाएगी। आप सिर्फ 2 चीज ही मैं बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये 2 चीज करके देखिए, आपका लाइफ काफी इंप्रूव होगा और चैलेंजेस को, टफ सिचुएशंस को आप काफी अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। Very nice. Thank you once again, Vikas, for this answer. And again, the lady who asked this question, thank you so much.
So with this, we have a comment from Chiranjeevi. Thank you so much for your response, and definitely going to use this 5 4 3 2 1 strategy. This was new for me and really interesting. Yes, it was. Great. Thank you, Great. Chiranjeevi, for acknowledging. Thanks. Okay, so friends, once again, now we are reaching to the end of the session. So you can ask your questions. I have uh, 2 3 questions more. So meanwhile, आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. And yeah, दिस इज योर टर्न, योर टाइम. एक क्वेश्चन ये है कि क्या ग्रेटिट्यूड भी कोई रोल प्ले करता है चैलेंजेस को ओवरकम करने में, या फिर चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने में? ग्रेटिट्यूड बहुत ही अहम भूमिका निभाता है आपको चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में देखने के लिए। मैंने बताया कि जैसे जैसे हम चैलेंज देखते हैं ना, चैलेंजेस हमारी लाइफ में आता है तो हमारी सोच निगेटिविटी की तरफ जाने लगती है। तो अगर हम कॉन्शियसली ग्रेटिट्यूड पे फोकस करें, ग्रेटफुल हों कि हमारे लाइफ में क्या क्या चीज जो हम सपने में देखा करते थे वो हमारी हकीकत बनी हुई, अगर मैं उस चीज को अनुभव करूं और महसूस करूं तो आप देखोगे कि आपकी एनर्जी अपने आप ऊपर उठेगी। मैं हमेशा बोलता हूं अपने सेशन में, ए ग्रेटफुल पर्सन कैन नेवर बी अंडर डिप्रेशन, कैन नेवर बी डिप्रेस्ड। तो आप यस. लाख भी चैलेंजेस आप फेस करें, मैंने बताया आपको इक्वेशन, क्वेश्चंस, फोकस, और उसके बाद मैंने बताया था आपका फिर इमोशंस, फिर जाकर के आपका डिसीजंस, फिर सारा था इक्वेशन। तो आप देखोगे फोकस मैंने बताया, फोकस आपका किस चीज पे है। फोकस अगर आपका उन चीजों पे है जो आपके लाइफ में ऑलरेडी है, बहुत सारी चीजों हमारी लाइफ में है जिसको हम नजरअंदाज करते हैं। मैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा सरल उपाय बताता हूं। आप क्या करो कि आप देखो स्टेटमेंट्स ऑफ कंप्लेंट क्या है मेरे, अब इसको उसी स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेंट को स्टेटमेंट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड में कन्वर्ट करेंगे। आप देखोगे बहुत सारी एनर्जी आपने सेव कर ली जो कि आपको हेल्प करेगा उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। हमारी बहुत सारी एनर्जी कंप्लेन में, ब्लेम में, ये सारी चीजें एनर्जी जो सक हो रही थी, आपने क्या किया, अपना अटेंशन, अपना फोकस डाइवर्ट कर दिया ग्रेटिट्यूड पे। जैसे ही ग्रेटिट्यूड पे फोकस करा, आपकी एनर्जी कंजर्व ही नहीं हुई, बढ़ी। बढ़ी हुई एनर्जी से किसी भी चैलेंजेस को डील करना बहुत ही सहज हो जाता है। वंडरफुल. थैंक यू. थैंक यू वंस अगेन. बहुत ही बढ़िया आंसर दिया आपने अपने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के लिए. और इसी के साथ हमारे पास एक कमेंट आया है दिव्या जी का. अमेजिंग लाइव. थैंक यू विकास एंड प्रशांत. थैंक यू सो मच दिव्या जी. थैंक्स मैम। I'm happy that you are loving the session. Thank you so much for being here and giving your precious time. यस, So थैंक्स। once again there is a question. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि जब हमारे पास फाइनेंशियल सेटबैक्स होते हैं तो उस टाइम पर हम उसको कैसे अपॉर्चुनिटी बनाएं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने बताया कि कंफर्ट जोन से निकलना हम लोगों को कई बार सेटबैक की तरह दिखता है। व्हेन वी आर फोर्स्ड बाय द चैलेंजेस, हम कंफर्ट जोन में रहना चाह रहे हैं, हम एक नौकरी में हैं, हमारे को सैलरी मिल रही है, हमारे को लग रहा है कि मेरी लाइफ तो बढ़िया चल रही है, ऑलरेडी सेट है। अचानक आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। दिस इज द चैलेंज दैट यू फेस इन लाइफ। नाउ यू हैव टू ऑप्शन, यू क्रिब, यू कंप्लेन कि मेरे बॉस ने मुझे निकाल दिया, ये बायस्ड है, ये बॉस को इतना भी सेंस नहीं है, मैंने बॉस के लिए इतना किया। नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज you are channelizing and draining your energy in the negative direction. Now another option could be, मैं ये बिलीफ अगर रखूं कि everything that happens with me is going to benefit me, even though I may not be aware now, but it is ultimately going to benefit me. I have complete trust in the process of life. I know this is how reality works. Now I have told you, my belief will create my reality. अगर मैंने ये बिलीफ रखा, सबसे पहला फायदा क्या हुआ
कि मैंने बिलीफ रखा कुछ भी मेरे साथ होगा अच्छा ही होगा। अब क्या हुआ, आपकी एनर्जी जो है ना, जो उधर जा रही थी क्रिप कंप्लेन में, बॉस को गाली देने में, वो हट गई। आपकी एनर्जी अब जो है वो यूज होगी क्रिएटिविटी के लिए, कंस्ट्रक्टिव चीज के लिए। नाउ यू विल थिंक कि आप देखोगे कि जैसे ही पॉजिटिव हो गए ना, आपका माइंड ओपन अप होगा और आपको अपॉर्चुनिटीज दिखने शुरू होंगी। आप किसी नए पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, आपको पता चला जो नया जॉब, नया रोल मिला है, वो कई गुना अच्छा है उस प्रीवियस रोल से जो मैं उस रोल में था, थिंकिंग दैट आई एम ओके विद इट। अदरवाइज बॉस निकाले नहीं होते तो मैं सोचता, मैं इतना बड़ा अच्छा खासा नौकरी चल रहा था, मेरे को निकाल के, ये तो बड़ा सेटबैक हुआ। अब व्हेन यू लुक बैक एंड थिंक, लुक बैक इन हाइंडसाइट, यू विल सी यार मैं तो बहुत अच्छे जॉब में चला गया, जो हुआ तो अच्छा हुआ। आपने बहुत बार ये चीज अनुभव किया होगा लाइफ में, बहुत सारी चीजें जो उस समय चैलेंजिंग लगती है, आप 3-4 साल बाद देखो तो दिखोगे उसी चैलेंजेस ने आपको ग्रो करने में हेल्प किया है, इवॉल्व करने में हेल्प किया है, ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प किया है। तो इसलिए इस बिलीफ को पकड़ के चलना है। योर बिलीफ क्रिएट्स योर रियलिटी, इस चीज को आप माइंडसेट में पूरी तरह से फीड कर लीजिए। और मैं हर सिचुएशन में, इवन दो आई मे हैव सम सिचुएशन इन माय लाइफ which may appear कि I do not prefer this situation, but what you do not prefer in this situation, which is also leading you to what you prefer, provided you believe that it is going to benefit me, it is for my benefit, it is perfectly orchestrated, well designed, and this is the exact thing that was to happen। अगर इस बिलीव के आप साथ चलते हो तो देखो, मेरे मेरे साथ इतने सारे एक्सपीरियंस है लोगों के, इंक्लूडिंग मी, जो मुझे बहुत ही चैलेंजिंग लगते थे उस समय। अब मुझे, मैं देखता हूं तो उसी चैलेंजेस के कारण मैं इवॉल्व हुआ हूं। सो all obstacles, all challenges, all problems helps you to step up your game, helps you to take your game to the next level, helps you to transform your life, helps you to come closer to your true self, helps you become more aware of yourself। सो देर आर इन्यूमरेबल एडवांटेजेस। बस पकड़ के चलो कि इवन मेरे को नौकरी से भी निकाले गई है, फाइनेंशियल सेटबैक आया है, तो मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है जो मैं सीख नहीं रहा हूँ। क्या सिखाने आया है? या तो मैं राइट। ऐसा नहीं हूँ कि कंफर्ट जोन में आ गया हूँ, मैं, मेरे में पोटेंशियल है और ग्रो करने का, लेकिन कंफर्ट जोन की वजह से मैं उसी वहीं अटका हूँ। तो ये बिलीव आपको काफी हेल्प करेगा। ऑसम, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू। मच वंस अगेन। सो एक क्वेश्चन और है इसी के साथ, आई एम लेफ्ट विद ओनली 2 more क्वेश्चंस। तो यस यस। पहला तो ये कि क्या विजुअलाइजेशन हमारी हेल्प कर सकता है, विजुअलाइजेशन टेक्निक जो है, कि हम चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करें, अगर हाँ तो कैसे? देखिए, मैंने बोला योर बिलीफ क्रिएट्स योर रियलिटी। अब बिलीफ मोटा मोटी तौर पे दो चीजों से आप बना सकते हो। या पहला ऑप्शन, आपके पास्ट में ऐसा कोई रेफरेंस है आपका जिसमें जिसमें आपने उस तरह के चैलेंजेस को फेस किया है, तो आपने उस चैलेंजेस को फेस ऑलरेडी कर रखा है, उस तरह के चैलेंजेस को, आपके पास रेफरेंस पॉइंट ऑलरेडी है, तो वो आपको हेल्प करेगा बिलीफ को स्ट्रेंथन करने में। आपके पास अगर कोई पास्ट में ऐसा रेफरेंस नहीं है, तो आप रेफरेंस क्रिएट कर सकते हो थ्रू विजुअलाइजेशन। आई विल विजिट इनटू द फ्यूचर and mentally rehearse myself in that situation, acting in the way that I want, think, seeing myself as growing, evolving। तो क्या होगा, मेरे लिए वो चीज जो फ्यूचर की चीज है, क्योंकि माइंड जो है ना, इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। आप उस चीज को इमेजिन करके बार 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 विजुअलाइज करके आप उस चीज को नॉर्मलाइज कर दे रहे हो कि एज इफ इट इज ऑलरेडी हैपनिंग। when you repeat this imagination and visualization again and again, then you get another reference leg of the future through the visualization that will help as a prop to help you support
दैट बिलीफ विच वाज नॉन एग्जिस्टेंट इन द पास्ट। उस तरह से आप उसको विजुअलाइजेशन के द्वारा एक नया बिलीफ को स्ट्रेंथन कर सकते हो। वंडरफुल। Thank यस। you once again, Vikas, for sharing your profound knowledge. इसी के साथ मेरा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज एनी फाइनल टिप यू वांट टू गिव टू द पीपल हु आर वाचिंग अस नाउ एंड हु विल बी वाचिंग अस लेटर, जो हमें अभी देख रहे हैं, जो हमें बाद में देखेंगे, उनके लिए कुछ ऐसा जो उनको इंस्पायर करे। यस। आप प्रॉब्लम्स को दुश्मन ना समझें, प्रॉब्लम्स को आप साथी समझें, और प्रॉब्लम्स हमारे को क्या समझाना चाहता है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, और उसकी बातों को नजरअंदाज ना करें। आप जितना प्रॉम्प्टली, जितना प्रोएक्टिवली उसकी बात को वो अहमियत देंगे, आप देखेंगे कि आपको इससे बढ़िया अकाउंटेबली पार्टनर, इससे बढ़िया फ्रेंड, इससे बढ़िया गाइड, इससे बढ़िया टीचर, इससे बढ़िया गिफ्ट कुछ नहीं मिल सकता। ये मेरा फाइनल वर्ड है। जो भी चैलेंजेस आया है आप उसको फ्रेंड समझें। ऑसम, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही अच्छा लगा। सो फ्रेंड्स, नाउ हम लोग सेशन के एंड पर पहुंच रहे हैं, एंड टू दिस एनलाइटनिंग सेशन। तो यहाँ पर आई वांट एक्चुअली वांट टू शो माय माय डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू, जो हमारे ऑडियंस हैं इस समय, जो हमें अभी देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, आप सभी के लिए आई शो माय ग्रैटिट्यूड। Your energy, your engagement, actually, and thoughtful participation, actually, इन सेशंस को बहुत बहुत मीनिंगफुल बना देते हैं. So thank you so much for that. It's always a privilege to share this space, with such an inspiring community. और जैसे कि विकास ने कहा कि मतलब आपका जो एनवायरनमेंट है, कि आप अपने आप को उन लोगों के साथ आसपास रखो जो आपको मोटिवेट करें, क्योंकि आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं उस टाइम पर जब आप सेटबैक्स को फेस कर रहे हैं. तो दैट इज अगेन योर लाइक माइंड्स कम्युनिटी. और जब आप लोग इन सेशंस में आते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें भी इंस्पायर करते हैं कि यस, दे आर पीपल जो कि कहीं ना कहीं हमसे रेजोनेट करते हैं, राइट. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इनटू द शो, एंड आई एम श्योर दैट यू ऑल आर ग्रोथ सीकर्स. अगर आप हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि यस, आई एम द वन. And a heartfelt thank you to our amazing guest speaker today, Vikash Kumar, for sharing his wisdom and actionable strategies कि आप अपने challenges को कैसे opportunities में बदल सकते हैं. So Vikas, your insights, आपकी जो insight हैं कहीं ना कहीं एक ऐसा fresh perspective देती हैं कि how to transform setbacks into stepping stones, and that is again for success. Thank you so much for that, for being here. And thanks to all the And participants and audience for being such a wonderful audience, and for asking such a profound questions, and which are very practical. And these questions will help others to trigger similar kind of thoughts. And my answers will, I think, most probably will help others also who might not have asked but might have the similar kind of questions in their mind. I think it would have answered their queries as well. So thanks for being such yes. a wonderful audience and participative audience, and it was nice interacting with you. And thanks Prasant Saniji for inviting me. I really feel privileged to be invited as guest in his YouTube live, which is full of wisdom, which is full of value packed, and it's my privilege to be a part of such sessions wherein Prashant Sainiji himself adds immense value by bringing in various guests from across different areas of your life to cater to various uh, categories of people facing different challenges in their life. So I really congratulate and thank from the bottom of my heart to Sanji for being I should say, being kind to give value to your audience by bringing in various sorts of people in your community. Thanks. Thank you so much. तो वंस अगेन दोस्तों, अगर आप विकास जी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी जर्नी को शुरू कर सकें, एंड देन यू कैन रीच आउट टू हिम.
और आप कैसे इन तक पहुंच सकते हैं कि जब सेशन हमारा एंड होगा तो मैं इनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल एंटर दोज डिटेल्स, एंड ये आप भी अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं. यू कैन कनेक्ट विद हिम डायरेक्टली, एंड यस यू कैन ऑल्सो एम्पावर लाइव्स जैसे कि विकास जी कर रहे हैं अभी, राइट. सो कनेक्ट विद हिम. और मैं यही कहूँगा कि अगर आपको वाकई में अपने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना है तो इससे बेटर कौन हो सकता है. एक ऐसे पर्सन जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जो लोगों की लाइफ को ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं, जो मोर देन 350 सेशंस कर चुके हैं, मॉर्निंग सेशंस, राइट. और जिसमें काफ़ी लोग इंस्पायर हो चुके हैं, इनके टेस्टिमोनियल्स बहुत अच्छे हैं. सो डू कनेक्ट विद हिम एंड लेट्स कैरी फॉरवर्ड द लर्निंग फ्रॉम टुडेज सेशन. आज जो आपने सीखा है उसको आगे जरूर लेके जाइएगा, दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप जो आप सीख रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी और के लिए भी काम आ सकता है, राइट. कि अपने चैलेंजेस को अपने माइंडसेट के साथ साथ आप कैसे चेंज कर सकते हैं, यू नो, कैसे आप उनको अपनी ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड yes, so thank you so much once again for joining us. Stay positive and stay focused, and I will see you in the next session. Till then, stay healthy, take care, goodbye, namaste. Okay, bye. Good night. Thank you.